Started. So this session is about a demo for Power BI Pro, basic to advanced, that I'll be teaching. By end of this course, you will be a person who can actually build dashboard on Power BI, build data models on Power BI, understand DAX, understand Power Query, get data from almost any tool that is available in the market connected with Power BI, and of course create amazing Power BI visualization. So before we get started, let's listen a little bit about FCKS. Like, what is FCKS? So FCKS stand for Achieving Freedom by Creativity and Knowledge Sharing. How many of you have been student for this institute before? कोई है जो पहले इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था? आप लोगों में से किसी ने किया है पहले कोर्स यहाँ पे? यस सर, अभी मेरा एडवांस एक्सेल का भी चालू है सर। आपका एडवांस एक्सेल चल रहा है? आपके वेरी गुड। यस। ओके, ऑलराइट। सो आप लोग को पता होगा कि हम लोग का जो फोकस होता है, आवर फोकस हैज ऑलवेज बीन टू हेल्प यू लर्न एंड नॉट टू कंप्लीट सिलेबस. What we do is we basically have trainers who are industry expert and have practical experience in the field, like I talked about myself, right? We use most simplified method to help you understand and learn, and the course is designed in such a way that even if you're not from a IT science or engineering background, you'll still be able to understand and learn it. Okay, so all courses are like that. There are a lot of support we provide in terms of job forum, query solving, and career guidance. One of the most important thing is our curriculum. Our curriculum is designed for you and your industry portfolio. Lot of example that we learn here, you'll be able to pick up and practically lift and shift to your work environment. We try to make these sessions as interactive as possible, but it depends on a lot on student also, right? So we'll try our best to make it interactive, and it is designed for working professional. So if you're working somewhere, you don't have to worry about spending extra time. Whatever you learn in the class, you'll be able to practice within the class itself. You'll have ample time to practice everything in class. If you practice a little bit more, that's a good thing. But if you're not able to do it, that is fine altogether as well, right? So this is a little bit about FCKS. Any question about the institute? No. Okay, no problem. All right. So let's talk about Power BI. But before that, you need to understand Power BI's core functionality is visualization. So all of you are working somewhere, right? All of you are working somewhere, or some of you are student as well? Working professional. Working professional, right? So do you have heard about the word visualization, and especially from analytical point of view? Can you tell me what comes to your mind when you hear word visualization? Table, The charts. representation. Table, chart. Okay. All right. Let's think a little bit about. Here's a small exercise for you. Okay, I'll give you some time, probably 3 minutes. Can you tell me how many values are greater than 7? You can take more time if you want, but then tell me how much time you'll take, and we'll see how accurate your result is. So in this table, can you tell me how many values are above 7? 13. 13. Okay. Any other thought from anybody else? चलिए 13 एक आंसर है, कोई दूसरा आंसर है? नहीं? फिर चैट में किसी No, ने sir. डाला है क्या? नहीं? ओके, चलो 13 बोल रहे हो आप सब. चलो देखते हैं, अभी काउंट करके देखो कितना है. 13 ही है, करेक्ट. बट जब उसके अंदर आपको कलर के साथ दिखता है, isn't it faster to see an answer, right? Correct. When it is highlighted, it is always easier to see an answer.
So that's what visualization does. Visualization का basic यही होता है that you are able to read and understand things faster. Okay. So what is visualization? Visualization is a method of communication that converts data into visualized, recognizable, and comparable information. So ये जो information is comes from CDQ framework, but let's ignore that. So visualization is basically method of communicating visually comparable information. ओके सो ये जो है ये कोर है पावर बीआई का, बट इसके अलावा और क्या है पावर बीआई में? पावर बीआई में आप ये 5 चीजें कर सकते हो। पावर बीआई के अंदर आप डेटा कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डेटा का मॉडलिंग क्रिएट कर सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो और शेयर कर सकते हो रिपोर्ट। और ये पांचों चीजें हम कवर करेंगे। विल कवर ऑल दीज 5 थिंग्स। Okay, so this is what we're going to cover in nutshell. Now, if you ask me, Rakesh, are we going to cover Nyan chart? Yes, we'll do it. If you ask me, are we going to cover ribbon chart? Yes, we'll do it. If you ask me, are we going to cover DAX? Yes, we'll do all of those. But this is the core. Okay, everything that falls into this will cover. Make sense? Yes. So we'll look at how to extract, transform, aggregate, analyze, visualize, and share data. Okay, so we'll learn all of this. Let's move on a little bit. These are some of the components of Power BI. You get Power Query, Power Map, Power BI Service, Power BI QA, Data Management Gateway, Data Catalog, Data Security, and these are all aligned with Power BI. So we'll learn some of these as well. Actually, we'll learn all of these. So I'm just trying to explain you what all will be covered at high level. Here are the data source that are supported by Power BI. We'll not cover all of these because we don't have access to all of these. But if you understand few of them, you'll be definitely be able to understand all of them later on. Okay. Just there is a different way of where to add password and when to add password, what kind of link to use. So we'll cover that part, but we'll not cover all these data sources. So I'm also telling you what will be not covered. Okay, so we cover all the functionality of Power BI, but we cannot connect to all data and see. Some of those data may not be even relevant these days. All right. Okay, what else we'll do? We'll understand how to build tile, we'll understand how to build dashboard, we'll understand how to build report, and we'll also understand how to build infographics. Okay, so these are some of the infographics. We'll also learn how to build infographics. Clear so far, guys? Are you with me? समझ में आ रहा है अभी Yes. तक क्या क्या कवर करेंगे हम? ओके, कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है? उनका वॉइस ब्रेक हो रहा है शायद। चलिए, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अभी आप सब लोग यहाँ पे हो, सो आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग को पावर बीआई क्यों सीखना है? यू कैन आंसर वन बाय वन, बट आई वांट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि पावर बीआई क्यों सीखना है। लेट्स स्टार्ट विद हर्षदा। हर्षदा, आप म्यूट पे। हर्षदा, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, चलिए, हर्षदा शायद कुछ टेक्निकल इश्यू फेस कर रही है। श्री सागर से पूछते हैं। श्री सागर, व्हाई यू वांट टू लर्न पावर बीआई? Actually, I don't have that much idea about this. ओके, बट आप सीखना चाह रहे हो, राइट? Yeah. ओके, क्या अचीव करना चाहोगे आप सीख के? जस्ट टू लर्निंग और यू हैव सम जॉब इन माइंड और गोल इन माइंड? Yes, job करना चाहते हैं। फ्रॉम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। साजिद, आप बताइए। Uh, to upgrade myself to get a better opportunity in my future company, and Power BI is one of the leading business intelligence tool in the market. So I have a basic knowledge of it. So I want to become a master in Power BI. So that's why I'm wanted to join AFCKS. So I had a advanced Excel and VBA macros course also did from the FCKS Institute. हम्म,
Okay, fair enough. Interesting. Sanket, आप बताइए. What about you? Yeah, I also want to scale up myself and want to learn something which is on cloud things. So as you know, all the things on cloud. So we are we are BI analysts, but we don't have the exposure to these tools. So I wanted to learn this tool. Okay, fair enough. Tejaswini, what about you? Sir, from job point of view only, I also want to learn the Power BI Fair enough. because Fair enough. Yeah. It is one of the growing market for analytics, and that is why you should learn. Here are some of the thoughts that I have. Why should you learn? All right. I have 9 thoughts about it. It is the number one tool in analytics. Analyze any kind of data. It is easier to learn. It has a wider application to any kind of functions that you can talk about. It can help you reduce that. If you do these reports manually using Excel, it will take a longer time compared to what it will take in Power BI. It will help you increase accuracy. It will help you be faster. It will help you save time because you're doing fast things, you're increasing accuracy. It will help you progress in career, and of course, you'll be more employable if you know more skills. Right? So some of these are the reason that I would say why I learn Power BI. All right, let's move on. We'll talk about why you should learn now. Okay, so let's think about it. It can be a good next step if you want to, make your career into analytics and data science. It will definitely be a very good step for you. Okay, so that's first thing. Hi Shivani, I think you just joined. We are talking about why should we learn Power BI and why should we learn now. Okay, so it will okay. help you increase. So there is always an increase in demand of data analysts and data science. So you'll be on a track of your dream job if analytics and data science is something where you want to make career. A lot of you said that that's the area that you're looking into. It can definitely help. And even in scenarios where you want to move from your job within a company from whatever role you have to analytics role, this is definitely gonna help you. चलिए थोड़ा अभी बात करते हैं कि आपको करना क्या है. हाउ विल यू लर्न एंड हाउ विल यू अटेंड द क्लास. ओके, so first thing you need to do is complete your registration. Okay, the fees is 16,000. If you pay one time you'll get some benefit and then you only have to pay 14,400, or you can pay into two installment of 8,000 at the beginning of the class and 8,000 after a month. The payment details are included. Once you make payment and register yourself, you need to attend the class from Saturday 1 p.m. to 4 p.m. every Saturday. Okay, for approximately 4 months. You need to learn with practical example and practice them during the class. One of the most important thing is to keep it interactive. So आपको interactive रखना है, आपको बात करना है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना है. ठीक है. एक एग्जाम रहेगी विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. आप अगर जो पास करते हो तो यूल गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम AFCKS. आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे जॉब क्वेरी और लर्निंग ग्रुप्स एंड स्टार्ट गेटिंग मोर एग्जाम्पल. You can reach out to me for any kind of guidance for further learning or anything that you want. After you get certified, start implementing it. Apply for your dream job. If you need any help there, I'll be there to help you, and continue to keep learning. So these are the next step to get enrolled, to get certified, and start implementing Power BI. I would recommend you to take a screenshot of it so you can remember, and after that you can move to a demo. Any questions so far? Yes, I have. Yeah, tell me. So, do we cover PL 300 examination preparation during Yes. the class? Yes, we'll cover PL 300 preparation, not the certification. Okay, preparation hoga will not pay for your fees. So the certification fees is not included in it because it's taken directly from Microsoft. So you have to take certification on your own, but you'll get to practice what comes into exam and prepare for it. Okay, got it. Yeah. Okay. Sir, what will be the certification fees?
Certification fee is 4,800 on Microsoft's website, so you need to check there directly. Okay. Okay. I'll help you once we are close to complete our syllabus. I'll help you with those things. Any other question? No from my side. ऑलराइट परफेक्ट चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और पावर बीआई को देखते हैं एक्चुअली सो मैं आपको कुछ डैशबोर्ड बनाऊंगा बताऊंगा जो हमने पहले बनाए हुए हैं और देन वी कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हाउ वी कैन बिल्ड दोस राइट सो मैं अपनी पहली बैच से बता रहा हूँ आपको so I'll just show you a couple of dashboard that we have built so करीब 164 क्या होता है 164 एग्जांपल्स है आपके पास में जो कि सिर्फ डैशबोर्ड और लर्निंग को बेस्ड है उसके बाद में एग्जाम के आपको 15 प्लस so total 34 plus 164 so close to 200 से ज़्यादा फिर रिवीजन के एग्जांपल्स रहते हैं आपके उसके बाद में आपको प्रैक्टिस एग्जांपल मिलेंगे you'll get custom visualization के एग्जांपल्स so कुछ 200 के आसपास एग्जांपल्स आपके हो जाते हैं और ये सब आपको खुद से करना है मेरे साथ में ओके सो इट्स नॉट लाइक दैट आई जस्ट show you and then you have to figure out how to do it you'll be able to learn and do it with me so I'm just going to show you some example of advanced visuals that we have used by the way Power BI software is free for desktop users so you don't actually have to buy that too okay I have a question. sure So, do we have a separate session or do we have a recording for each session? no we'll not have recording for each session the reason behind this is when we did recording in the past what happened is people were relying more on recording rather than coming to the class which impacts student heavily so we want to make sure that student come to class if you miss one of the session there will be revision every week first 30 minutes will be dedicated to revision so you'll not miss anything if you miss one day if you miss let's say 3 or 4 days 3 or 4 weeks like entire month then we can arrange separate sessions for you along with new batches okay so this is one of the simplest dashboard that was built it's taking a little bit time to load because this is not the usual PC that I use this is a very basic one मैं दूसरा भी देखता हूँ Alright, so this was one of the dashboard that we have built. It's taking a little bit more time than expected, so apologize for that. So you can see some of the elements here, right? These are called cards. You have visualization, you have what if analysis. Let's say my profit is 29% and what things changes, right? So that kind of analysis you can do here. Then you'll have on hover visualization. When you hover on one of the things, it will show you how to some more details on those data points.
You can ask question like top cities by profit, and it will tell you those, right? So this all was built by us in the classroom, and every time, we do a better examples, right? So you'll see bigger examples coming every time. There's multiple ways also to see it, like you can see by chart, you can see by matrix view. So all those things you'll be able to learn. You'll be able to learn how to add this thing, which is decomposition tree, which talks about how things are moving from one side to another. You can do also the further analysis about uh, key influencer. So this is more about a data science based analysis, which talks about where the value is coming from, right? So you will be able to learn this also. So if somebody is joining, Jiju. So you'll be able to learn these things also and build these things on your own. You can look at increase, you can look at decrease, you can look at top segment. So ये सब चीज़ें हम बनाएंगे और ये हम सब सीखेंगे. अपना बेसिक जो स्टार्ट होगा, that will start with how to connect data, how to create a chart, right? That will be our basic. But eventually we will be able to show you more things. What do you think about it? ये डैशबोर्ड अच्छा लगा आप लोग को? ये मेरी सबसे Yes. आई थिंक काफ़ी दिनों पहले की बैच में बनाया हुआ है. अभी तो हम लोग काफ़ी एडवांस चीज़ें बना रहे हैं, जो मेरी नई बैच चल रही है उसमें. सो या ये सब चीज़ें रहेगी. मैं आपको एक छोटा सा डेमो बना के दिखा देता हूँ, चाहिए तो. सिंपल डेमो जहाँ पे हम डेटा कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो आई शो यू वेरी सिंपल थिंग. लेट मी क्लोज these and start Power BI. देखिए, थ्योरी का पार्ट वैसे भी लिमिटेड रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट थ्योरी पार्ट. विल कवर इट एज वी गो. देयर इज नॉट लॉट ऑफ थ्योरी इन पावर बीआई ऑनेस्टली. सो सी, आई एम स्टार्टिंग विद अ ब्लैंक रिपोर्ट, और मैं लेट्स से जो डेटा है वो एक्सेल से ले लेता हूँ या ओ डेटा फीड से भी ले सकता हूँ. लेट्स सी इफ आई हैव सम यूआरएल. चलो मैं सर्च करके ले लेता हूँ. सो काफ़ी सारा डेटा आपको ऑनलाइन मिलेगा. सो एक ओ डेटा फीड करके होती है. देखो, अभी ये समझने में आपको थोड़ा सा एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि मैं बीच में से कहीं दिखा रहा हूँ आपको. आई एम नॉट शोइंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग और एट द एंड. आई एम शोइंग यू समवेयर इन बिटवीन. दिस मे नॉट मेक लॉट ऑफ सेंस, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? सो एक ओ डेटा सर्विस करके एक होता है, जहाँ पे हमारे पास में कुछ फ्री डेटा अवेलेबल है. इसके अंदर लेट्स से मैंने ये कस्टमर पे क्लिक कर दिया, और कस्टमर के साथ मैं ऑर्डर डिटेल्स पे और ऑर्डर्स पे क्लिक कर रहा हूँ. अब मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड बाकी टेबल आ जाए. सो आई जस्ट क्लिक ऑन सिलेक्ट रिलेटेड टेबल्स and I'll get all the tables that are related. So these are the max table that are related, right? Let's say मैं इसके अंदर region select कर लेता हूँ and say select related table. So some more will be selected and I can load all of them together. So जैसे मैं load करूँगा, यहाँ पे डेटा अभी लोड हो जाएगा. देखो, अभी पूरा डेटा लोड हो रहा है, अलग अलग टेबल्स. अभी ओ डेटा का फायदा ये होता है कि डेटा जो है ऑलरेडी कनेक्टेड होता है. ओके, whereas if you built it manually you will have to create those connections. So ये सब हम सीखेंगे, कनेक्शंस कैसे क्रिएट करना है. आप लोगों ने एक्सेल में VLOOKUP यूज किया होगा, राइट? Yes. Yes. तो VLOOKUP में क्या होता है, मेनी टाइम आपके पास में एक टेबल होता है, उसके अंदर लेट्स से एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम नहीं है, तो आप क्या करते हो?
आप डेटा वो लेके आते हो। तो देखो अभी हमने 3-4 क्लिक में इतना पूरा डेटा लेके आया है। All these table we got just with few clicks, right? So Power BI is fast, but this was automated, right? So we'll also learn how to do it manually, how to build this relationship, how the relationship work, how the cross filters work, how cardinality joint works, right? So इसको काफ़ी सारा knowledge मिलेगा आपको। और ये जो सब wordings मैं use कर रहा हूँ, these are the wordings that you'll also need to use when you actually uh, start working in any organization. So let's see, अभी मैं एक सिंपल चार्ट पाई चार्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं यहाँ पे कैटेगरीज डाल दूंगा। सो यहाँ पे कैटेगरी नेम डाल रहा हूँ और वैल्यूज के अंदर मैं ऑर्डर डिटेल्स में जाके क्वांटिटी डाल रहा हूँ। सो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड अ सिंपल चार्ट। बट देखो यहाँ पे भी क्या है, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस है, मतलब टोटल प्राइस क्या होगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो मैं यहाँ पे चाहूँगा आई से न्यू मेजर, और मैं आसानी से यहाँ पे एक नया मेजर बना सकता हूँ, सेल्स प्राइस। यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भैया क्वांटिटी क्वांटिटी। ओके, कहाँ से उठा रहा है ये? हम लोग एक काम करते हैं, इसको नहीं करते हैं, वी विल ऐड अ न्यू कॉलम एंड मल्टीप्लाई इट। सो यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, एंड आई बेसिकली वांट मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ ये देखो, ये आ गया, ऑर्डर डिटेल्स क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, और इसको हम बोल सकते हैं टोटल सेल्स। राइट, सो देखो अभी आपने नोटिस किया होगा, मेजर नहीं यहाँ पे हमने कॉलम बनाया। सो आप लोग ये सीखोगे कि कॉलम कभी बनाना है, मेजर कभी बनाना है। सो ये जो ये टोटल सेल्स आ गया अभी हमारे पास में। सो काफ़ी सिंपल है पावर बीआई सीखने के लिए। ओनली चीज़ ये है कि इट इज़ वेरी वास्ट। ओके, और जब चीज़ें काफ़ी वास्ट होती है, सो यू नीड गाइडेंस, यू नीड एग्जाम्पल्स, और वही आपको ये क्लास में मिलेगा। देखो मैं एक और चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, एक मैप ट्राई करते हैं हम लोग, सिंपल वाला मैप ट्राई करते हैं। इसके अंदर हम रीजन्स में जाएंगे या फिर टेरिटरीज में जाके हमारे पास में लोकेशन मिलता है क्या, देखते हैं हम लोग। मैंने डेटा रैंडमली उठाया है तो मैं भी आप लोगों के साथ देख रहा हूँ कि मेरे पास सिटी मिलती है क्या। देखो मेरे पास में कस्टमर सिटी, एम्प्लॉय सिटी, ऑर्डर शिफ्ट टू सिटी है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट टू सिटी को लोकेशन में डाल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दी कि कहाँ पे कौन सी सिटी है, राइट। अभी इसके अंदर हम अपना सेल्स डाल के देखते हैं। सो आई जस्ट पिकअप सेल्स एंड विल ऐड इट टू बबल साइज। सो यहाँ पे जो बबल दिख रहा है उनकी साइज चेंज हो जाएंगे। सो ये एक तरीका होता है। फिर अगर जो आपको ये चार्ट पसंद नहीं आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन अदर वन एंड इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट फॉर यू, राइट। सो चार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। सो अभी हमारे पास में दूसरा चार्ट आ गया। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करोगे और आपको सीखने मिलेगी। फिर आप इंटरैक्शन भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, कहीं और क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे एक और रिपोर्ट बनाता हूँ, ठीक है। इसको अलाउ टूल टिप करके मैंने किया हुआ है, तो देखो ये छोटा हो गया अभी, है ना। इसके अंदर मैं एक सिंपल चार्ट लगा देता हूँ अभी। लेट्स से किस चीज़ पे लगाऊँ, लेट्स से आई पुट इट अगेन ऑन कैटेगरी नेम। सो मैं यहाँ पे विजुअल ऐड कर दूंगा आपका पाई चार्ट वाला ही। इसके अंदर मैं डालूंगा कैटेगरी नेम की जगह थोड़ा सा और डिटेल में देख रहा हूँ। लेट्स से मैं रीजन ले लेता हूँ कहीं से। सो कंट्री ले लिया, चलिए मैंने लेजेंड के अंदर कंट्री ले लिया और यहाँ पे टोटल सेल्स डाल दिया वैल्यूज़ में। सो मुझे इस तरीके से आ रहा है। अभी अगर जो मैं यहाँ पे जाता हूँ
ये वाला जो हमने बनाया हुआ, राइट। इसको थोड़ा अनजूम कर लिया मैंने। यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टूल टिप। ओके, सो टूल टिप के अंदर हम चाहते हैं कि हमें वो वाला चार्ट जो है वो दिखाई दे, राइट। सो वो हम कैसे करेंगे? सो यहाँ पे आप टूल टिप के अंदर फील्ड डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यूनिट प्राइस यहाँ पे डाल दिया। जब मैं इस पर होवर करता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे यूनिट प्राइस लिख के आता है। तो उसकी जगह अगर जो मुझे रिपोर्ट डालनी है या कुछ और दिखाना है, सो हाउ डू वी शो इट, दिस विल यू लर्न। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक डैशबोर्ड में दिखाया था, राइट, कि कैसे हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पेज के अंदर मैंने पेज 2 जहाँ पे हमने बनाया था वो सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जब इस पे होवर करूँगा तो मुझे वो कंट्री वाइज ब्रेकअप दिखाई देगा, राइट। काफ़ी आसान है ना? मुश्किल लगा ये आपको? देखो इसके अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं किया हुआ है। अगर जो मैं यहाँ पे भी इनेबल कर देता हूँ उसको, तो वो यहाँ पे भी दिखना शुरू हो जाएगा। यूएस का कितना सेल है, यूके का कितना सेल है। और देखो इसके अंदर शायद कुछ अपनी जो कनेक्शंस है दे आर नॉट एट द करेक्ट लेवल, बिकॉज मुझे यूएस के अंदर यूके का सेल दिखा रहा है, थोड़ा सा ही दिखा रहा है बट दिखा रहा है। सो ऐसी चीज़ें कैसे फिक्स करना है ये सब हम सीखेंगे। सो एक और चीज़ होती है, जो एग्जाम्पल हमारे रहते हैं दे आर कम्प्लीटली फ्रेश। So you will also learn while doing the example ki how do you troubleshoot, how do you fix things and so on. Any questions so far? Am I audible, folks? आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? Yes, yes. No question. Okay, if there are no question, I'll stop here, right? And I'll conclude it as a demo. I'll come back to the next steps. So आपके जो next step है वो ये है, आपको पहले अपनी फीस पे करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। आप 2 इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो या पूरा एक साथ भर सकते हो, इट इज़ अप टू यू कंप्लीटली। वंस यू डू दैट विल स्टार्ट द कोर्स। अभी कब से शुरू करेंगे हम लोग, राइट? हम लोग शुरू करेंगे आइदर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी 14th of September is what 14th ही होगा ना, या 14th of September is what I feel. इट वोंट बी 7 बिकॉज कुछ फेस्टिवल्स चल रहे हैं अभी, राइट। 7th को गणेश चतुर्थी है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बी अवे, और आपके अलावा दूसरे भी स्टूडेंट हैं जिनके लिए डेमो हुआ है। सो देयर विल बी मोर स्टूडेंट, बट इन जनरल विल स्टार्ट फ्रॉम 14th of September. मेक सेंस? ऑल राइट, रियली टफ पीपल, कोई बात नहीं कर रहा, मैं अभी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और थोड़ा आप लोग के बारे में जानता हूँ, देन विल कंक्लूड हियर। ऑलराइट, आई विल जस्ट आस्क यू सिंपल क्वेश्चन एंड दैट इज, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सो लेट मी स्टार्ट विद संकेत, उनका नाम पहले आ रहा है मेरे पास में। संकेत, एनी क्वेश्चन सो फार? No. No? Okay, alright. You understood what we did with Power BI? I didn't cover it like very basic, but I showed you what good things we can do. Yeah, yeah. I got it. Okay. Harshada, any questions? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। साजिद, any questions? Yes, I have. Sure, go ahead. So, do we cover some parts of SQL Server while working on Power BI? No, that's a complete different course. Okay. So, you will show how to connect with the SQL Server with the. Yeah, we can cover like, that part. That's not very difficult. But you know, working with SQL Server, there are certain areas where you can query directly, do a lot of things, right? We'll not cover all those. Connectivity, I'll show you. Look, our focus is Power BI. Okay? Power BI में सब कुछ हम cover करेंगे. We'll not go to specific tool which is complementary to Power BI. Okay? Okay, fine. Okay. हाँ. All right. Tejaswini, any questions? Okay. Jijo, any questions? No question, but the recording for this demo will be sent to the WhatsApp, right? Yes, yes. It will come on WhatsApp and it will also be available in YouTube. Don't worry about it. Okay. Okay. Shivsagar?
No, sir. No question. No question. All right, then I'll let you all go. I'm going to send my number in the chat, right? So if you have any questions, you can reach